बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है कि तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफ़ियत से होंगे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है और इसके मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है यकीनन वो आप तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच चुकी होगी। सबसे पहले जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर है वो है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इससे पहले जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करते रहे हैं वो फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम थे या उनको इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कहते हैं। इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होते हैं। तो अब जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे वो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं या उनको हम नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट rotating coordinate systems. Consider two coordinate systems. One is represented by small x and y, and the other is represented by capital X, Y, and Z. The coordinate system capital X, Y, Z is fixed or inertial coordinate system with origin O, whereas the coordinate system small x, y is moving with some constant angular velocity omega with the same origin O with respect to the fixed coordinate system, that is capital X, Y, Z. Consider a vector A which is changing with time t to an observer fixed relative to the moving coordinate system small x, y, z. The time rate of change of this vector A is given by equation number 1. In this equation, the subscript m indicates the derivative in the moving coordinate system. This is the time rate of change of vector A with respect to the moving coordinate system small x, y, z. However, the time rate of change of vector A relative to fixed or inertial coordinate system capital X, Y, Z is denoted by F and is given by equation number 2. Here the subscript represents for fixed coordinate system, and this subscript m represent for moving coordinate system. Note that in equation 2, if omega, that is angular velocity, is 0, it means the moving coordinate system, that capital X, Y, Z is at rest. Then both terms dA by dt and dA by dt on right side, that will be equal to 0. It means that both coordinate systems are at rest. Derivative operators. Let df and dm represent time derivative operators in the fixed and moving coordinate systems. Then we can write the operator equivalence, that is given by equation number 3. ये जो ऑपरेटर इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है, इसकी मदद से हम जो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन के जो रिलेशंस हैं उनको हम फाइंड करेंगे मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में. Next is velocity in a moving coordinate system. If the position vector A is replaced by a position vector r of a particle, then equation 2 will become, equation 2 is this equation, and और ये जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर A है, इसकी जगह हम पोजीशन वेक्टर R जो है उसको रिप्लेस करेंगे. तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी फॉर्म ये आ जाएगी. अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसको हम ये जो ऑपरेटर जो कि इक्वेशन नंबर 3 में लिखा था इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो इक्वेशन नंबर 5 की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है. दूसरी नोटेशन जो है वो इसके लिए जो इक्वेशन नंबर ये जो वेलोसिटी इन मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है या नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनमें उनके लिए जो नोटेशंस हैं वो ये हैं
Vp by f. It represents velocity of a particle p relative to fixed system. Vp by m, velocity of a particle p relative to moving system, whereas Vm by f, that represents the velocity of a moving system relative to fixed system. So in view of these notations, equation number 4 or 5 both can be written in a new form, and that new form is given in equation number 6. Next, acceleration in a moving system. जैसे कि ये हमारे पास वेलोसिटी है और आपको पता है कि वेलोसिटी का जो एक डेरिवेटिव वन टाइम मोर एक मरतबा डेरिवेटिव जो है वो और लें तो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन आता है. तो उसके लिए जो नोटेशन है डी स्क्वायर एफ, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर बाई एफ, and this is for fixed coordinate system, whereas this notation is for moving coordinate system. So when we will take the derivative of equation number 4 or 5 or 6, the acceleration equation can be obtained, and that is given by equation number 7. अब ये जो equation number 7 है ये किस तरह आई है, ये आप प्रॉब्लम नंबर इसी बुक के प्रॉब्लम नंबर 6.6 में देख सकते हैं. सिंपल डेरिवेशन है. उसके बाद ये जो एक्सेलरेशन है, जिस तरह वेलोसिटी को न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल इसी तरह जो एक्सेलरेशन है उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ए पी बाई एफ, इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिव टू फिक्स्ड सिस्टम. ए पी बाई एम, it means acceleration of particle p relative to moving system, and a m by f, it means acceleration of a moving system relative to fixed system. So in view of these notations, equation number 7 may have the form that is equation number 8. Next, this is exercise problems 6.4 and 6.5. Very simple. Determine the velocity of a moving particle as seen by the two observers in problem 6.1. 6.1 is the problem of the book written by Spiegel. So in that problem we will replace vector A by position vector r of the particle. Then you know that we will have the expression of velocity that is given by equation 1. Now if r is expressed in terms of the unit vectors I, j, k of the moving coordinate system, then the velocity of the particle relative to this system may have the form that is given in equation number 2. Note that this is the velocity with respect to moving coordinate system, and the velocity of a particle relative to fixed coordinate system is given by 1. Here the velocity that is given in equation 3 is sometimes called the true velocity, whereas the velocity given in equation 2 is named as apparent velocity. There is an example in which we will find the apparent velocity and true velocity. We are given angular velocity of a moving coordinate system and position vector r. So it is very easy. The apparent velocity, in order to find apparent velocity with respect to moving coordinate system, we are just to take the derivative of position vector r, that is given by this equation, whereas in order to find true velocity we have to simulate not only dr by dt but also omega cross r, then we can get true velocity or pure velocity.